Okay, so warm welcome to all of you. Today we have our guest speaker, Dr. Sanjana Bole. She has done her MD in Ayurveda Rasa Shastra and Bhaishajya Kalpana from Poddar Medical College. Um, she is a yoga trainer, a nutritionist, a Garbha Sanskar coach, and she has more than 11 plus years of experience working with kids. She specializes in counseling, especially for parental counseling. She has a very good pediatric practice also. She practices at Kandivali at Ayu Clinic. So we welcome Dr. Sanjana Bhole and let's see what Dr. Sanjana has to share. Dr. Sanjana, uh, Yes. we are not able to see your video. Can you switch on your video? Okay. Ma'am, I have restarted it again. Can you see it now? At least I cannot see. I don't know about others. Can anybody confirm in the chat if they can see any other video on? No, I Uh, can't see Dr. Sanjana yet. okay. So I did. Like I can see myself, so I thought that I'm visible. Dr. Sanjana, I have sent you a request again, invited you to stage. Uh, I'm getting this option of leave stage. Okay, just once leave stage and then I will join. again. Hello, ma'am. I'm visible now. Ma'am, visible now. Yeah, am I visible now? Hello. Yeah, visible now, right? Am I audible as well? Yes, perfect. Okay. So should we wait? We should begin now, ma'am. Please, Dr. Sanjana, please begin. Okay, ma'am. I will just start with sharing the screen first. Is the title of the slide visible, ma'am? Yes. Okay. So let's begin. Thank you so much, ma'am, for a kind introduction that you gave. Um, so I welcome all of you for our today's session of unlocking your child's hunger. So if you are already here, that already means that you want your child not just to survive but flourish and thrive. And what a better gift to give to your child than empowering them with your lifetime of optimum health and well-being, isn't it? So to begin now, I'll move to the next slide. This slide is basically an indication of what is healthy and what is not healthy. All these three pictures which we have in front of us, it's clearly evident that the
picture in the center is what we call as a healthy child, the one who has a good appetite, who is happy, who is curious, who is optimistic, who is playful, good energy levels, strong immune system, confident, as well as self assured. Now, if you see the picture to the left of side of yours, we see a kid who is thin, emaciated, with blank expressions, definitely malnourished, suffering fatigue, irritation, must be having a weak immune system. Also, if you see the picture to the right of the screen, we see someone who has an excess body weight, who has a very low self esteem, maybe not interested into physical activities, could be facing attention difficulty. Our basic aim for today's webinar is we need to keep our kids, our children, into the middle picture category. Most of our kids are already into this, but we feel that they are so thin and fatigued, and our aim is to make, and in the aim to make them healthy, we end up making them as the picture onto our right. So to avoid doing all this, we'll go through what is health and what is not. That's why we understood what is health and what is non-health. Now, when we talk about being healthy, the first thing that comes into consideration is how good the digestion is. Okay, to briefly explain what digestion is, I'll explain it using this picture. Say you are hungry and you have eaten food. This food right here gets mixed with the saliva in your mouth. You chew that food, it forms a food bolus, and through the esophagus, via the movement of peristalsis, it goes to the stomach in this part. In this part, the digestive enzymes which are present break down this food into small foodstuffs and prepare a mixture which is semi liquid, semi solid in nature, which is called as a chyle. This chyle further goes to the duodenum part, this first part of the small intestine, where a lot of secretions from our liver and the pancreatic juices further break down this food into units of nutrition, which can now further be easily absorbed into the further loops of this small intestine. After this absorption of nutrients which takes place in the small intestine, the remainder now moves towards this part of the large intestine, where it gets fermented by the good gut bacteria, produces vitamins, as well as the water gets reabsorbed from this part. Now the remainder of this, after this process, the insoluble waste further takes the form of the stool, goes to the rectum area, and is excreted out through the anus. This is what a basic human digestion is like. नाउ व्हाट वी फील इज कि हमने आज कुछ खाया, ये हमने आज खा लिया, ये आज ऐसा यहाँ से मूव होके अगले दिन सुबह निकल गया। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वॉट एवर वी हैव हैड टुडे गेट्स आउट ऑफ आवर स्टमक इन द नेक्स्ट डे मॉर्निंग इटसेल्फ। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन दिस मूवमेंट। हमने क्या खाया था, किस समय पे खाया था, हाउ वॉज द क्वालिटी ऑफ द फूड, हाउ इज द क्वालिटी ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, and how much time our digestion is requiring to process it, all of this matter. ये एंड अगर हम बच्चों का देखने जाएंगे तो कंपेयर टू ह्यूमंस, देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट दैट फुल्ली फॉर्म्ड, इट्स नॉट दैट established kind of a system. So उनके हंगर टाइम्स, उनके पॉटी टाइम्स, उनका डाइजेशन टाइम, ये हर एक चीज़, उनका मील टाइम, ये सब कुछ वेरी कर सकता है। आज शायद उनको ज़्यादा खाना लग सकता है, कल शायद उनको कम खाना लग सकता है। आज सीज़न के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा खा सकते हैं, शायद कल नहीं भी खाएंगे। ये सारी चीज़ें वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन व्हेन वी आर लुकिंग इनटू द डाइजेशन और न्यूट्रिशन ऑफ आवर किड्स। ओके, सो मूविंग ऑन। सो जब भी हम डाइजेशन कंसिडर करते हैं, देर आर टू एस्पेक्ट्स इन आयुर्वेदा विच रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग, जिसपे द डाइजेशन इज डिपेंडेंट। द फर्स्ट थिंग इज द अग्नि। नाउ व्हाट इज द अग्नि? अग्नि इज nothing but the digestive fire or the transformative fire, which is a vital force which is required by the body to break down of the food particles for absorption, for assimilation, as well as excreting at a proper time. ये अग्नि अगर आपकी अच्छी है, then you are
अच्छी है और बैलेंस्ड है एंड स्ट्रांग है, तो यू फील लाइट, यू आर एनर्जेटिक एंड योर इम्यूनिटी इज गुड। एट द सेम टाइम अगर आपकी ये अग्नि वीक हो गई है या इम्बैलेंस हो गई है, तो यू सफर फ्रॉम हाफ डाइजेशन काइंड ऑफ सिस्टम इन द बॉडी, जिसके वजह से टॉक्सिन्स जमा होते हैं एंड आगे जाके डिजीज बढ़ता है। तो ये स्ट्रॉन्ग अग्नि और वीक अग्नि ये क्या है, ये हम आगे वाले स्लाइड में देखते हैं। So this is just for a basic understanding कि if your Agni is strong, what will happen is you will be fostering good health, vitality, longevity of life. Your quality of life would be great. You would be having a strong immunity, the mental clarity, the enthusiasm, the happiness, and the courage with which you face life will be so much better. Comparatively, if you have a weaker Agni, what will happen is your body will accumulate toxins. Constant accumulation of these toxins will make you susceptible to many infections, many diseases. बहुत सारे mood changes हो सकते हैं. You can be irritable, you can be cranky, you can be having a poor appetite. There can be hyperactivity in certain kids, there can be sluggishness in certain kids. कुछ बच्चे हम ऐसे देखते हैं that they are generally just low in energy or they get mentally foggy, right? So this is a basic understanding for any parent whether the Agni of your child or that digestive fire of your child is good or it is weak. Okay, the second concept that we need to talk about is this concept of ARM, that is this toxic load in the gut. Before explaining ARM, I would like to explain a bit of about Agni better. So for example, आपने एक कुछ सब्जी एक बर्तन में गैस पे बनाने के लिए रख दी है. इफ दैट गैस इज वेरी स्ट्रांग तो क्या होगा, वो सब्जी जल जाएगी. इफ योर गैस इज वेरी वीक तो वो सब्जी कभी पकेगी ही नहीं. अगर वो गैस बाहर से आई हुई हवा के वजह से कम ज्यादा हो रही है तो कुछ पार्ट्स उसके पक जाएंगे, कुछ पार्ट्स उसके नहीं पक जाएंगे. इससे होगा क्या, ऑल इन ऑल दैट सब्जी वोंट बी, वो इज नॉट एडिबल, वो हम खा नहीं सकते एंड वो वेस्ट हो जाएगा. सिमिलरली यू कैन रिलेट द कंसेप्ट ऑफ अग्नि, कि अग्नि अगर आपका अच्छा है तो आपने जो भी कुछ खाया है वो आपको अच्छे से पच जाएगा. इफ योर अग्नि इज नॉट गुड और इफ इट इज वीक, देन व्हाट विल हैपन, जो भी फूड बॉडी के अंदर गया है वो इम्प्रॉपर से प्रोसेस होके it is going to accumulate the toxins. Now moving on to understanding of this arm. So अगर आपका अग्नि वीक है तो होगा क्या, ये जो अनडाइजेस्टेड अनप्रोसेस्ड जो खाने का जो रेसिड्यू है वो बॉडी में रह जाएगा. ये अनप्रोसेस्ड रेसिड्यू ना आपको न्यूट्रिशन देगा, ना आपको कोई एनर्जी देगा, बट इट विल गेट स्टक इन द बॉडी एंड स्टे इन द बॉडी. ये अक्यूमुलेशन अगर लॉन्ग टाइम तक होते रहा तो वो टॉक्सिक हो जाएगा एंड आगे जाके इट इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ डिजीजेस. ब्लोटिंग हो सकता है, एपेटाइट इश्यूज हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लूज मोशंस हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन मैटर करता है, फोकस बच्चे का हिल सकता है, ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट खराब हो सकती है, राइट? सो बेसिकली ये आम करता क्या है, ये जो आम है ये अनप्रोसेस्ड जो फूड मटेरियल बॉडी में रह जाता है, ये बाय नेचर हेवी एंड स्टिकी होता है एंड इट ब्लॉक्स माइक्रो एंड macro as well as micro channels in the body, causes a traffic jam in the body and thus spoils the nutrition process and causes symptoms. Now ये आम किन वजह से बनता है एंड कैसे वो अफेक्ट करता है वो हम देखते हैं. ये जो कॉजेज हम अभी आम के बारे में कंसिडर कर रहे हैं ये बेसिकली हमने इन रिलेशन टू किड्स करके फोकस किया है. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वीक डाइजेशन, वो तो हमने अभी देख लिया कि अगर बच्चे का डाइजेशन वीक है और अगर आप उसको कितना भी अच्छा खाना दे देते हो तो भी वो बॉडी उसको अच्छे से प्रोसेस करके उससे क्वालिटी न्यूट्रिशन नहीं दे सकता है एंड दैट फर्दर अक्यूमुलेट्स arm or toxins even if the quality of the food that you have given is of a super quality. Okay, सेकेंड थिंग जो हम बच्चे में देखते हैं कि वो ओवर ईटिंग करते हैं, कभी कभी अपनी कैपेसिटी से या अपने भूख का ध्यान बिना देखे खाना खा लेते हैं. अभी इसको समझने का एक सिंपल ऑप्शन है कि आपको अगर एक आग लगानी है और आपने कुछ लकड़ियां गैदर की है और एक छोटी सी आग लगा दी है. अभी ये आग बढ़ाने के लिए आप अगर लाके एक बड़ा लकड़े का टुकड़ा उस पे अगर डाल दोगे तो क्या वो आग अग्नि या क्या वो आग आपकी बढ़ेगी?
नहीं, वो इतने बड़े टुकड़े से भी जो एक्चुअली आग जलाने के काम में आता है, वो आग को बुझा देगा। सिमिलरली अगर आप बहुत सारा खाना बच्चा बहुत सारा खाना खा रहा है, बिना सोचे खा रहा है, या आप ज़बरदस्ती खिला रहे हैं क्योंकि चलो बच्चे ने लंच नहीं किया है तो उसने वो टाइम पे कुछ खा लेना चाहिए, या फिर दिन में 4 बार तो खाना ज़रूरी ही है, या ब्रेकफ़ास्ट कितना इम्पोर्टेंट है। बच्चे को बिना भूख के भी अगर आपने खिलाया, तो उसका जो बेसिक अग्नि है, वो चीज़ें पचाने को रेडी ही नहीं है, वो एंजाइम्स वो बॉडी में प्रोड्यूस ही नहीं हुए हैं, तो ये सिचुएशन में आपने दिया हुआ खाना डेफ़िनेटली अंडर प्रोसेस्ड रह जाएगा बॉडी में, और आगे जाके इट इज़ गोइंग टू कॉज़ हार्म इन द बॉडी, एंड फर्दरमोर इफ दिस कंटिन्यूज़ तो टॉक्सिन फॉर्मेशंस होते रहेगा, राइट? नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू सी इज फ्रीक्वेंट मील्स, कि इसको भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आपने एक दिया लगाया है, एक तेल का दिया लगाया है, एंड बिफोर उसका तेल खत्म होने के पहले या उसके पॉट में आप और ऑयल डालते जाओगे, उससे क्या वो दिया और जलेगा, या और वो ब्राइट होके जलेगा, या वो बुझ जाएगा, राइट? वो जो दिया जलाने की बत्ती है वो और मॉइस्चन होके वो दिया बुझ ही जाएगा। सिमिलरली अगर आपने बिना भूख के या बिना नीड के बहुत सारा खाना, या अभी फ्रूट खा लो, अभी नट्स खा लो, अभी दाल राइस खा लो, अभी पनीर खा लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके न्यूट्रिशन नीड्स को देखते हुए भी अगर आपने दे दिया ना, तो भी वो बॉडी वो चीज को डाइजेस्ट न करते हुए वो सिर्फ बॉडी में पड़ा रहेगा, एंड इट विल कॉज एन issue in the future. One important thing that comes, जो बच्चों में हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, वो है कि खाना खाते ही तुरंत वो लोग खेलने जाते हैं, या तो खाना खाते ही तुरंत वो लोग नहाने चले जाते हैं, राइट? सो क्या होता है ये सारे सिचुएशन में कि ये चीज़ें क्यों डिसकंटिन्यू करना ज़रूरी है? नेचुरली जब हम खाना खाते हैं, तो जो बॉडी का ब्लड फ्लो है, वो डाइजेशन को एड करने के लिए पेट की तरफ आना ज़रूरी होता है। अगर हम खाना खाने के बाद तुरंत खेलने गए, तो ये जो ब्लड फ्लो है, ये मूवमेंट की तरफ, हाथ और पैरों के मसल्स की तरफ रीराउट हो जाता है, और जो उसका काम, ब्लड फ्लो का काम जो पेट में ज़रूरी है, वो वहाँ ना होते हुए अदरवाइज जाने के वजह से इंडाइजेशन होके आगे जाके इट कॉजेज हार्म इन द बॉडी, विच आगे जाके कैन कॉज कि बच्चा कभी कभी कंप्लेन करता है कि खेल के आने के बाद तुरंत पेट में दर्द हो रहा है, या खेल के आने के बाद लूज मोशंस हो गए हैं, या कभी गैसेस बन रहे हैं, या कभी रात को सोते समय बहुत सारे पैर दर्द कर रहे हैं, एक्सेट्रा। सिमिलरली जब भी आप खाना खाने के तुरंत बाद नहाने जाते हो, तो नेचुरल ब्लड फ्लो इज एक्सपेक्टेड कि इट हैज टू गो टुवर्ड्स द स्टमक, बट आप अगर नहाने जाते हो, यू गो फॉर बेदिंग एट दैट टाइम, देन दैट ब्लड फ्लो गेट्स डायरेक्टेड टू द स्किन, एंड इट कॉजेज टेम्परेचर, इट अफेक्ट्स द टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ द बॉडी। सो उससे होता क्या है, अगेन ये जो डिस्ट्रैक्टेड डाइजेशन है will again lead to causing harm in the body, will cause indigestion, lethargy होता है, कभी कभी excessive sleepiness दिखाई देता है। Many times you feel that the child is going through recurrent sessions of cold and cough, sinus pains, कभी tonsillitis, कभी कान में दर्द, etc. These things you can see. One very important and very hot topic of arm formation जो recent दिनों में इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, is the screen time or doing any other thing while eating. बहुत पेरेंट्स ऐसे हमको आके बोलते भी है हमारे क्लिनिक में कि उसको स्क्रीन नहीं दिखाया तो ये बच्चा खाना ही नहीं खाएगा। द स्क्रीन टाइम इज इम्पोर्टेंट फॉर कीपिंग हिम काम, कीपिंग हर काम। इफ स्क्रीन टाइम ना हो ना, तो वो बच्चा हमारा सुनेगा ही नहीं। अभी होता क्या है, ये स्क्रीन टाइम के वजह से आईज और ब्रेन तो वो जो स्क्रीन पे दिख रहा है उस पे फोकस करते हैं, और स्टमक का जो पचन का काम है वो निग्लेक्ट हो जाता है। वो टाइम पे वो बच्चे ने बराबर से खाना चबाया है कि नहीं, उसने बराबर से उसको चबा के प्रॉपरली स्वॉलो किया है कि नहीं, अपने भूख के हिसाब से खाया है, या स्क्रीन टाइम देखने के लिए वो बच्चा खाते रहा है। सो हैज ही ईटन इन has he eaten about the quantity of his or her hunger, or he has overeaten or undereaten? ये सारी चीजें मिसप्लेस हो जाती है। अगेन बॉडी को जो सिग्नल्स मिलने चाहिए रिलेटेड टू हंगर, रिलेटेड टू सैटिएशन, all of that get disturbed, and this again distracted digestion will cause toxins in the body.
Similar thing will happen if you are doing any other thing while you are eating, or even if you are reading. So आपका ध्यान, आपका फोकस, आपका पूरा अवेयरनेस आप रीड कर रहे हो या आप कुछ और कर रहे हो उस पे है, तो वो जो फोकस टाइम, वो जो अटेंशन, वो जो अवेयरनेस से खाना खाना गया होना चाहिए, वो तो बाजू में रह जाता है, एंड डाइजेशन अपना काम कर लेगा ये समझ के हम उसको छोड़ देते हैं, राइट? डाइजेशन के हिसाब से आम अग्नि, ये हमने देखा, दे आर अबाउट द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर digestion, but there is one psychological aspect also that we need to take into consideration, जिसको हम बोलते हैं gut mind axis. Now what is this gut mind axis? Gut mind axis is basically a connection, it's a two-way connection between our gut, हमारा digestive system, and our mind. They convey important messages to each other via our nerves, via hormones, via immune responses. कभी आपने ऐसा भी ऑब्जर्व किया है कि आपको बहुत सारी भूख लगी है एंड सडनली एक फोन आ जाता है दैट मे बी समबडी वेरी क्लोज टू यू इज नॉट वेल, या आपके बच्चे को स्कूल में है और फीवर आ गया है, या समबडी वेरी क्लोज टू यू हैज पास्ट अवे, या देयर हैज बीन अ लॉस इन योर बिजनेस. व्हाट हैपेंस? क्या वो टाइम पे यू रियली think about your hunger and forget everything, sit down and eat? No, naturally your hunger goes away. तो ये क्या है? ये माइंड डिस्टर्ब होने के वजह से गट को जो सिग्नल्स मिले हैं उसके वजह से हंगर बिगड़ गया है, उसका सिग्नल है. आपने ऐसा भी नोटिस किया होगा कि बहुत बार बहुत गुस्से में खाना खा लिया है एंड उसके बाद यू आर एक्सपीरियंसिंग एसिडिटी. ये सारे इंडिकेशन है कि हाउ आवर फूड has a big importance in shaping our mind and how our thoughts have a big importance in shaping how our digestion is, right? So moving on, so these are the important reasons कि आजकल बच्चे why are they losing their hunger nowadays. Okay, so इसमें first one is the snacking culture which we discussed अभी. frequent खाना हो गया, चिप्स किसी ने ले आया खा लिया, किसी ने मोमोज खा लिए, पिज्जा खा लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारी चीजें once in a while it's okay, but if it keeps on happening over time, अगेन इट डिस्टर्ब्स द डाइजेशन एंड जो प्रॉपर एपेटाइट है बच्चे की वो बिगड़ जाती है. स्क्रीन टाइम वाइल ईटिंग, वी जस्ट डिस्कस्ड इट. इरेगुलर मील टाइम्स और फोर्सफुल फीडिंग. अब इरेगुलर मील टाइम्स इंक्लूड ऑल द मील टाइम्स व्हेन द किड इज नॉट रियली हंग्री एंड उसको खिलाया जाता है, भले वो ब्रेकफास्ट का आपका सेट किया हुआ टाइम हो या लेट नाइट मील्स हो. If the kid is eating something when he or she is not hungry and you are forcefully feeding it just because say you want to clear the kitchen, say just because बच्चा भी पूरी रात भर सोया है, उसको सुबह भूख लगना चाहिए, स्कूल जाता है तो उनका रिसेस 10 बजे होगा, that's why I will give him some milk, I will give him some nuts. Whenever he or she is not hungry, all of these comes into irregular meal times and forceful feeding, which definitely over time affect the hunger of a person, affect the appetite, affect the nourishment that the kid gets, and overall affects the immunity, leading to recurrent illnesses while growing up and certain kinds of lifestyle diseases that that person can encounter in his older years. Second, another thing is wrong meal items. There are a lot of incompatible food combinations which are mentioned in the text of Ayurveda and which are going through our Indian culture as well. So अगर आपने कभी फ्रूट एंड दूध साथ में मिल्क शेक करके बना दिया, यू विल थिंक कि दूध भी तो अच्छा है, फ्रूट भी तो अच्छा है, बट व्हेन दे कम टुगेदर दे कॉज difficulties to the digestive system and they cause these toxins in the digestive systems to accumulate. So ऐसी सारी चीजें अगर मील्स में आती रहेंगी तो the kid over time is going to lose the hunger today. Okay, one important aspect which comes across why kids are losing the hunger today is emotional overstimulation. होता क्या है, आजकल द फैमिलीज आर स्मॉलर, पीपल जनरली वांट टू दे फॉलो कि हमारा एक ही बच्चा है, हमारा तो सब उसका ही है, तो द होल लाइफ मूव्स अराउंड दैट किड. सो इफ ही इज नॉट ईटिंग, तो
तो अच्छा बाबा तू ये नहीं खा रहा है तो तू यू ईट दिस, इफ यू आर नॉट ईटिंग दिस तो यू ईट दिस. ओके, नाउ पेरेंट्स आर बिकमिंग स्ट्रिक्ट, सो ग्रैंड पेरेंट्स आके उनको बोलेंगे कि चलो चलो तुमको जो अच्छा है वो हम खिला देते हैं. इससे होता क्या है, बच्चे को यही नहीं समझता है कि उसके लिए एक्चुअली अच्छी चीज है क्या खाने के लिए. he or she will definitely follow what is tasty, what is जो खा के ऐसा टेस्ट में मजा आ जाएगा या कुछ नया हो जाएगा. वो हेल्दी है कि नॉन हेल्दी है ये समझने की अंडरस्टैंडिंग एट दैट किड एट दैट पर्टिकुलर टाइम है, ये जरूरी नहीं होता है. सो व्हाट हैपेंस इज ओवर सम डेज दे अंडरस्टैंड कि चलो अपने को भूख नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसा कुछ करेंगे या ऐसा कुछ बोलेंगे तो हमारे मॉम डैड हमको जो चाहिए वो लाके देंगे. So there it starts a cycle of manipulating the parent, manipulating the family members and अपने मन का करवा लो. अगेन ये सारी चीजें ओवर टाइम उनको ही हार्म करेंगी. नेक्स्ट थिंग इज ओवर फीडिंग. अपनी टाइम पे लगे हुए भूख से ज्यादा खिलाना कोई भी प्रकार का खाना इज डेफिनेटली अ बिगेस्ट कॉज दैट किड्स आर डेवलपिंग पुअर एपेटाइट ओवर टाइम. एक रोटी से क्या हो जाएगा, आधा थोड़ा राइस ले लिया तो क्या हो जाएगा, अरे ऐसे थोड़ी होता है, इसमें तो नट्स तो खाने ही चाहिए आपने. ये जो सारी चीजें होती रहती है ओवर टाइम amongst the big causes of people losing the hunger. Okay. One more important cause आजकल which has caused poor appetite or poor digestion is this irrational use of antibiotics, which happens, which is really dangerous if it happens to kids, especially below 1 year of age. It is also harmful to other kids. So we had been to this genetic conference last year where a group of pediatricians had posted their research, had spoken about their research. So they had done a research for over 5 years and over the kids, for kids under the age of 1 year. And they had seen कि जिन बच्चों में the antibiotics use was especially high, right? Their gut microbiome, the good bacteria in the gut, were totally destroyed, and over their next few years of their life, their immunity was suffering really badly, right? So it was a alarming thing which has been happening nowadays, that कुछ भी हो जाएगा तो antibiotics pop कर लो and all is well, राइट. सो अभी ये सारी चीजों को हमको अगर चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा. समथिंग विल हैव टू बी डन. यू कैन नॉट जस्ट कीप इट कि लेट इट बी, जैसे चल रहा है इट विल हैपन, मेडिसिन विल टेक केयर. वी हैव टू स्टार्ट विद दिस चेंज, राइट. सो हाउ डू वी ब्रिंग अबाउट दिस चेंज? सो there are 3 points which we have to consider in this: is the meal frequency, the meal quantity, and the meal quality. Meal frequency and the meal quantity will be decided by the child, that he or she has to eat his meals only and only when he or she is hungry, and you need to give the food to the child only when they demand for food, not as per the time, not because अभी स्कूल जाना है, not because अभी खेलने जाना है, not because अभी कहीं बाहर जाना है, and not because you want to clear the kitchen. The meal frequency will be decided only and only by the kid, which can vary as per the season, which can vary according to how his or her day was, which can vary about how his or her digestion was yesterday, etc. Right? सो एंड मील का क्वांटिटी, तो मील का क्वांटिटी ये हमको बच्चों को ट्रेन करना है कि हमको कभी भी 100% ऑफ आर क्वांटिटी खाना खाना नहीं है, हम थोड़ा सा कम खाएंगे, राइट. सो अगर हम 10 निवाले खा सकते हैं, वो टाइम पे हम 8 निवाले खाएंगे. भले दिन में हमको 6 बार भूख लग सकती है, हमको 10 बार भूख लग सकती है, हमको खाना कितना है तो भूख से थोड़ा कम. सिमिलरली पानी के साथ भी ऐसा है कि 1 लीटर का पानी मेरे बच्चे ने पी लेना चाहिए. एक कोई डाइटिशियन ने या कोई इंस्टाग्राम पे या कोई सोशल मीडिया पे ऐसा पोस्ट आ गया है कि बॉडी वेट के हिसाब से इतना पानी जरूरी है, इतना लेना चाहिए. नॉट एट ऑल. योर किड should have water when he or she feels thirsty, and the habit should be of having water which is at room temperature, not fridge water, not iced water at all. Okay, no flavored water at any cost unless advised by any doctor. Okay, so these two things, the meal frequency and the meal quantity, will be decided by your kid. What you decide is the meal quality.
This is where your role plays, that you play a very big role in this. तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? तो when you go for grocery shopping, you you do it very smartly. आप ऐसी चीजें लेके ही नहीं आओ घर में जिससे उनको वो खाने का अट्रैक्शन हो. अगर घर में बिस्किट्स है ही नहीं, अगर घर में चिप्स है ही नहीं, अगर कुछ जंक फूड घर पे है ही नहीं, तो वो बच्चा खाएगा ही नहीं, राइट? हम अगर कभी बाहर गए एंड वंस इन अ वाइल, वंस अ मंथ अगर आप बाहर गए एंड आपने कुछ खाया, दैट इज द ओनली एक्सपोजर टू से समथिंग विच चिप्स हो गए, या किसी के आप घर गए एंड समबडी गिव चिप्स, तो दैट इज द ओनली एक्सपोजर द किड विल हैव. लेकिन इससे ये एक ट्रेनिंग हो जाएगा कि ये सारी चीजें है ना, ये वंस इन अ वाइल है, ये वंस इन अ वाइल घर के बाहर कभी गए तो खाने की चीजें है, दीज आर नॉट अ रेगुलर मील. सो द कंसेप्ट that this is a regular food, this is a festival food, this is a occasional food, that has to be trained by you, that has to be made understood कि ओके ये हमने आज खाया है बिकॉज ऐसे ऐसे था, ये चीज हमारे घर पे नहीं होती है और घर पे होगी नहीं, तो बच्चे को वो दिखेगी नहीं, एंड ही इज नॉट, ही और शी वोंट डिमांड फॉर इट एट ऑल, right? So if you keep something like cold drinks in the house, if you keep ice creams in the house, if you actually go and keep a lot of chocolates in the house, तो बच्चा तो by default मांगेगा ये सारी चीजें, right? तो उसमें उनका क्या fault है, right? If we don't get it only, तो ये सवाल आएगा ही नहीं, right? So that is one thing parents need to actually care about. Moving on. ओके, सो बच्चे का जो न्यूट्रिशन है, या यू कैन कंसिडर दिस एज ह्यूमन बींग्स का भी जो न्यूट्रिशन है, दैट वेरीज एज पर द एज वेरीज ऑफ द पेशेंट. ओके, द जैसे बच्चा बॉर्न होता है, फॉर द इनिशियल 6 months to 1 year, as at an infant stage, his immunity is building up, his body is building, his brain is developing, but his food is totally dependent about upon his mother's milk. Okay, food ka frequency at this age, the breastfeeding frequency at this age also has to be demand fed. It need not be कि चलो ये रात को ना उठे इसके लिए अभी हम उसको मिल्क दे के सुला देते हैं, या अभी वो थोड़ा सो जाएगा इसलिए हम उसको मिल्क दे के सुला देते हैं, या थोड़ा वो क्रैंकी हो रहा है इसलिए मिल्क दे के सुला देते हैं. लेट दैट ऑल्सो बी अ डिमांड एंड सप्लाई काइंड ऑफ अ थिंग. ओके, मेजरली इंपॉर्टेंट थिंग एट दिस स्टेज इज, बच्चे को जो न्यूट्रिशन मिलेगा टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ द न्यूट्रिशन द मदर गेट्स. If the mother's diet and lifestyle and the habits are something which are going to cause accumulation of toxins in her body, so by default these toxins via the breast milk are going to go to the infants, and that kid might develop colic की pain हो गया, loose motions हो गया, constipation हो गया, right? So at this stage, when the kid is dependent totally on the mother's milk, or when he is taking breastfeeding, it is very important for the mothers to look after their diet, their lifestyle accordingly. As you come to the weaning off stage, which usually starts after 6 months, we slowly start introducing different small foods to this new to this kid. Now this transition has to be very careful and has to be done very awarefully. वो बच्चा वो टाइम पे कोई नई भी चीज खाएगा, तो डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ हिज स्टमक, ही और शी इज गोइंग टू हैव 2 spoons और 5 spoons. इफ यू एक्सपेक्ट कि भाई दिस kid needs to have one whole full bowl of dal, या one whole full bowl of rice ka pani, it is not possible. That will again come into overfeeding of your kid, right? And since the digestion is just taking over and the gut is very sensitive, so at this time indigestion hona, arm formation hona is very quick and very easy in these kids. So one has to be very careful about what you give the how you, when you feed and what you feed. Moving on, slowly when the kids grow and they are in the age of 1 to 3 years, यहाँ पे ना their metabolism, their digestion is still slowly getting regularized. The parents have to be really conscious on what the kid is eating, what he should eat, what he should not eat. ये टाइम पे यू नीड टू एक्चुअली एनकरेज द किड्स कि वो अपने हाथों से खाए.
न स्पून से खाए। हाँ, कुछ लिक्विड है, ऐसी कुछ चीजें हैं आप उसको खिला रहे हो, अलग चीज है, लेकिन बाकी की चीजें लेट द किड एक्सप्लोर विथ हिज ओन हैंड्स, लेट हिम फील द टेक्सचर, लेट हिम फील द कंसिस्टेंसी of the food. That will actually train his neurons, that will make him understand कि okay, this is how the food is, this is what the texture is, right? So खाना खाते खाते ये जो छोटी छोटी चीज़ों से उनका लर्निंग होते रहता है, उनके ब्रेन का डेवलपमेंट होते रहता है। पॉसिबल है कि ये खुद से खाना खाते वक्त वो लोग अपने कपड़े खराब करेंगे, वो लोग आपका फ्लोर खराब करेंगे, आपका काम बढ़ा देंगे, but this step of letting them eat with their own hands is really important for their own growth and awareness. Okay, मूविंग ऑन, एज द किड ग्रोज अप, वो 3 साल का हो जाता है, 3 साल से बड़ा हो जाता है, वो अपने घर के लोगों को ऑब्जर्व करता है। द पेरेंट्स आर दे हीरोज, लाइक मेरे मॉम ने ये किया है तो ये बराबर ही है, मेरे डैड ने ऐसा खाना खाया है तो इट्स द राइट थिंग टू डू। ओके, मेरे डैड सब्जियां नहीं खा रहे हैं, ओके, तो दैट इज ओके, बिकॉज ही इज नॉट लर्निंग बाय एग्जाम्पल ना, ही फील्स इट इज ओके, बिकॉज सिंस माई फैमिली मेंबर्स आर नॉट डूइंग इट, it's probably the right thing to do, right? So ये time पे you have to choose wisely, you have to instill this concepts की what is regular food slowly, what is occasional food। ये बच्चा खुद जाके तो चिप्स नहीं मांगेगा ना at the age of 3 year old या 4 year old, उसको वो एक्सपोजर ही देने वाले हम पेरेंट्स हैं, उसको वो चीज़ें कि ये चीज़ें मिलती है या ये चीज़ें ऐसी लगती है। कोई भी 3 साल का बच्चा जाके ऐसे तो बोलेगा नहीं ना कि चलो मैं आता हूँ होटल में, मेरे लिए फ्राइज मंगा दो करके। ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस ही हम करते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम उनको क्या इंट्रोड्यूस करते हैं। एट दिस टाइम थिंग्स लाइक स्टोरी टेलिंग या स्लीप टॉकिंग प्लेज अ वेरी बिग इंपॉर्टेंस विच वी विल डिस्कस इन दी फर्दर स्लाइड्स। ओके, ना जैसे जैसे ये बच्चा 8 साल से बड़ा होते जाता है, हियर द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स स्टार्ट कमिंग हियर। ऑल्सो देर आर growth spurts in this age, adolescence stage is slowly creeping in, hormonal changes होते हैं, peer pressure ज़्यादा होता है, exposure to a lot of junk food is being there। सो ये टाइम पे आप क्या करोगे? आप उसको बोलोगे अरे तूने जंक खा लिया तो तू गंदा बच्चा है, और डू विल यू स्टार्ट कंपेयरिंग और कंडेमिंग दैट थिंग? नो, इफ यू डू दैट, दैट पर्सन धीरे धीरे आपसे छुपा छुपा के ये खाना खाना शुरू कर देगा, विच विल बिल्ड अप गिल्ट इन द किड। So what you do at these times? At some times you let them eat what they are eating. At other times you give them life examples कि चलो ये खाने से ये बंदा इतना हेल्दी है, कि चलो विराट कोहली तो ऐसा खाना खाता है। दैट्स इट, यू जस्ट पुट इन अ सेंटेंस, यू डोंट हैव टू टेल हिम इसका क्या है। कभी कभार बातों में यू कैन टेल बेनिफिट्स ऑफ फूड स्टफ्स। Okay, you can involve them into small things related to cooking, कि चलो सब you wash the vegetables, or okay, this is how we make the dough, you explain the procedure of cooking, you are explaining the small masalas to the kid, and when he or she is actually doing better, you reward them not in the form of food, reward them with praises, reward them with appreciation, make them feel that their action towards their health is valued, and that's how they'll remember it for life, right? So ये सब न्यूट्रिशन में वेयर डज आयुर्वेद कम, वेयर हाउ विल आयुर्वेद हेल्प यू? सो द बेसिक थिंग व्हाट आयुर्वेद डज इज आयुर्वेद करेक्ट्स द अग्नि। Ayurveda is not just a plain medical science, it's a life science. It teaches your stomach how to digest instead of just how to eat the food. Okay, so it will help you decide correct food, decide correct food timings, improve your routines, and all by doing all this, it will help you restore your natural hunger, right? Basically it resets your digestion from the root cause. Second thing is you need to listen to your child's demands। Okay, kids compared to the adults are more in sync with the nature। उनके जो systems है वो अभी तक बाहर के exposure से या negative influences से अभी तक corrupt हो नहीं जाते। So वो time पे when they feel that they are not hungry and they don't want to eat food, respect their demands, do not force feed them, encourage them, create a atmosphere कि भाई तुझे भूख लगे तब तू you come and tell me and then you have the food, that's it। As soon as the kid starts growing up, let them even take their own
let them even take their food in their own plate. Let them feel that they are deciding what they are eating and how much they are eating. That will also help them to build up their awareness for hunger. Again, Ayurveda can help you, recommend a diet as per your body's constitution. It's a very individualistic science. Moving on, about the screen time that we already spoke about, the stopping of screen time has to be very gradual. At certain ages now, between 1 to 3 years of age, you can use certain tricks. Like nowadays, most of us have a smart TV at home, right? So you can set a timer in such a way that कोई खाना खा रहा है ना, तभी वो अपने आप बंद हो जाए. Right, I'll give you example with the daughter of one of our doctors in our team, Dr. Snehil's daughter. Okay, they were having food one fine day, and that TV just switched it off itself. So that's when she actually came and she told her father, अच्छा खाने का time है इसलिए TV अपने आप बंद हो गया ना. So you understand, these things are get, and she is just 2.5 years old, right? So you see, these small things make them understand कि चलो ये करना है तो ये टाइम पे ये नहीं होता है. और ये एज से अगर ये चीजें स्टार्ट होती है, तो over time when they grow older, they really don't fall for the temptations. Okay, one important thing is about Suvarna Prashan. Now, what is Suvarna Prashan? I'll just tell you it in short. Suvarna Prashan is Ayurveda's gift for lifelong protection to the kid. It's a small chavanprash consistency kind of a thing, which helps, which is given to kids from 2 months of age to 16 years of age, which helps in resetting the metabolism and helping physical and mental growth of the kid. It helps the kids to improve their focus, their attention in life. And we have observed that the kids who have been taking Suvarna Prashan daily for some months also are falling less sick. And even if they fall sick, they recover very quickly. Their immunity builds up that well. Next point where Ayurveda can help you is wisely using of your antibiotics. It is natural for a kid to have fever, to have cold and cough, to have certain issues related to their health. Instead of first jumping onto, let's चलो खांसी हो गया है, हमने सिरप दे दिया, हमने सिनारेस दे दिया, एक्सेट्रा कोई भी दवाई दे दिया, first let the body take the time for the body to let it heal itself. जितना भी हो सके, मिनिमम मेडिसिन से जितना बॉडी रीसेट कर सकता है अपने आप को, उतना हेल्प करिए, उतना उससे मैनेज कर सकते हैं. एंड इफ नीड बी, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एंटीबायोटिक्स, यू कैन ऑप्ट फॉर हर्बल ड्रग्स. ओके, another aspect. Now last, these two things are very important when it comes to training your kids. The first is this topic, technique of sleep talking. Okay, what happens in the sleep talking is you are subconsciously shaping your child's uh, personality, your child's character. क्योंकि होता क्या है, it's our subconscious mind which actually stores a lot of memories, or stores a lot of beliefs about ourselves, stores a lot of emotions, stores our confidence, stores our insecurities, right? And thus it helps to shape our personalities. So ये sleep talking is the thing which parents can do for their kids, right? उसमें करना कैसा is, when the kids go off to sleep at that time, like जब नींद थोड़ी कच्ची हो, say about 1 hour when they have just fallen asleep and they are just going to get up in the morning, वो वाला 1 घंटा, आइदर पेरेंट, मदर एंड फादर, अगर फादर रात को कर रहे हैं तो मदर सुबह करेंगे, एंड मदर रात को कर रहे हैं तो फादर सुबह करेंगे. दे प्लेस देयर हैंड जेंटली ऑन द किड्स हेड एंड से affirmative small affirmations, statements which are positive, which are positive, which are basically positive statements like you are healthy, or you are happy, or you are a good kid, or any habit that you want to instill in the kid. You just say it to that kid at this times when he has just fallen asleep and when he or she is just about to wake up. You do this habit consistently for about
10 days, you see what transformations are happening in your kids. You don't need to even tell them, you don't need to even explain it to him, but that some subconscious imprinting of these qualities will really help them to absorb these messages into themselves and shape themselves. Okay. Next, another thing that we are going to discuss is about storytelling. Abhi, long before there were these classrooms, long before there were teachers, school teachers, or long before there were psychologists, right? Most of our culture and our scriptures have are filled with multiple stories that the parents since long time have been using to instill values and virtues in the kid. Now, why storytelling? स्टोरी टेलिंग इज द टाइम जहाँ पे हमारा कॉन्शियस माइंड रेस्ट हो जाता है एंड सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है कि जो मैसेजेस हमको कन्वे करने हैं वाया द स्टोरी, वो डीपर पेनिट्रेट होके बिकम्स अ पार्ट ऑफ द किड्स पर्सनैलिटी. सो ये स्टोरी टेलिंग कौन करे? पेरेंट्स कर सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स कर सकते हैं. इट इज आइडियली एडवाइस कि आप वो स्टोरी उनको नरेट करें. डोंट जस्ट रीड इट फ्रॉम अ बुक, and definitely do not show it to them on a screen using any social media app. The way you convey the stories, the way you narrate the stories, you don't even need to reveal the morals to them. Let the kid understand on its own कि ये story से हमको क्या समझना है. Stories can be anything. Stories for panchatantra, you can use any animals, you can use any characters which the child might be inspired with, or looking up to it, and you can make certain stories or narrate certain stories and convey deep values which will shape their character, their personalities. Okay, moving on. Right. So, as a concluding message, what I would like to tell you is about the nutrition, which will change as per age. So, do not force feed the kids, do not overfeed the kids, do not disregard their statements when they say that they are not hungry, because more than the quality of the food, it is important that how much the body can actually digest and derive nutrition, which again changes with age. One another thing that we need to understand is that change will always start from the parents. If the child is going to see कि मुझे ना बोल के मेरे पेरेंट्स तो फोन लेके ही बैठे हैं खाना खाते वक्त, या मुझे ना बोल के मेरे पेरेंट्स तो टीवी देख रहे हैं ये टाइम पे, सो ही और शी इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड कि दिस स्क्रीन टाइम इज नॉट राइट, right? So he will just follow what you are doing. So always try and lead by example. Even if you have very important meetings or very important deadlines, is the child going to understand कि आप फोन पे काम कर रहे हैं या आप फोन पे टाइम पास कर रहे हैं? राइट, वो तो यही देख रहा है कि मेरे पेरेंट्स के हाथों में स्क्रीन है, मेरे पेरेंट्स के हाथों में फोन है. इट्स अ राइट थिंग टू डू. So you need to be very sure of your actions, because they are going to observe and learn things from you. Next is you need to become their friend. Instead of just कि तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रही है, कभी हमने उनको डांट दिया क्या, कभी हमने उनको इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया, try and discuss the issues that they are facing. Right, sometimes it's more important that you just stay and listen to what is happening inside, and most of the times the problem or the issue that the kid is facing nearly goes off just because they have said it in their safe space to their safe person. Sometimes let go, let them do what they want to do, and then later on when they are in a receptive stage, explain it to them कि ये करने से ये होता, ये कर लेते तो ऐसे हो जाता, कभी ट्राई कर लो तुमको मन करे तो. एट टाइम्स थोड़ा नेगोशिएट कि चलो आप ऐसे करो तो ऐसे करेंगे again, but the barter or the negotiation should not be in terms of food, should not be in terms of any negative activities. And then there are times when you need to be really firm. You need to make these ground rules कि ये खाना आएगा तो यही खाना घर में रहेगा. The grandparents also, you need to sit with them, make them explain, explain it to the relatives कि वो हमारा बच्चा खाना मांग लेगा तभी आप उसको खाना दीजिएगा. Do not force him, do not give him when he is not asking for all this. So that's one thing. And one main thing is create mutual respect, not fear. So before ये बच्चा हमारे लाइफ में आया,
What were we? We were somebody's sister, somebody's brother, somebody's daughter, somebody's wife, somebody's husband. We are a parent now because of the kid, right? So that space, that mutual respect among your relation should always be there. Chalo bachcha chota hai to let go of his opinions, let go of his things. ऐसा is not right. Okay, अगर आपको उससे बात करनी है तो come down to his eye level, to his height, look into his eyes, look into her eyes, and talk to them. Make them feel valued, that their opinion or whatever they are saying is heard and not just put on blind or deaf ears. That is a very important thing. Again, कोई भी बुरी आदत है, कोई भी बुरी हैबिट है आपके बच्चों की, do not make it their identity. So even if something has happened and the kid has said something in anger, or said, or cried, or did some tantrum, right? You don't make it a identity कि ये तो बच्चा गुस्सा ही करता है, ये तो बच्चा रोता ही है. It's you and your kid as a team versus that habit. That habit is not your kid, right? So with this sentence, I end today's webinar. For the upcoming workshop, we have the topic is smart eating for kids, and what you need to feed your children. So today we saw ki what is hunger and what the factors which will actually affect the kids hunger, जिस किससे उनका हंगर बढ़ेगा, किससे उनका हंगर कम होगा. इसके आगे वाले सेमिनार में, इन द सेम सीरीज, वी आर गोइंग टू डिस्कस कि इफ द किड इज हंग्री एंड व्हेन ही इज हंग्री, व्हाट ही नीड्स टू बी फेड, right? About uske details we'll keep you posted in the same community. Any questions you have, you can always contact us. This is our clinic number. All the doctors of our clinic, of IU Academy, are available, and we are very happy to help. Also, there are other courses which we at IU Academy take for everybody. There is a Swasthya course which is right now going on, which helps you understand your body as per the season, how your routine should be. There are courses on Garbha Sanskar to help the mother and the kid and the family with a joyous pregnancy. There are sessions where you can learn about mindful eating, mindful sleep. So anybody of you, if wish to attend, you can go through it. Thank you so much for a patient listening, and have a pleasant evening. Over to you, Hima ma'am. Thank you, Dr. Sanjana. That was very beautifully explained. You can, if you just can stop sharing, then we can have we can start with the question and answers from the chat. Yes, ma'am. Okay. So, if anybody has a question, they can either post it on chat, or we can invite you on stage and you can directly ask Dr. Sanjana. Anyone? I can't see actually. I'm unable to. Yeah, you will get a repeat video. Kamini Patel is asking. Okay, there are questions. Beenal is asking how to improve the gut health. I think that was quite well explained, but Dr. Sanna, would you just like to explain it in short again? Yeah. In a- So, firstly, how to get back the gut health, you need to understand why your gut health has gone bad. You need to get aware about how your food habits are. If you are actually eating when you are hungry, if you are actually eating and eating as per your body's quantity and need, so that will determine how your gut health is. So that's about it. If you want to add something, Dr. Hima, you can. I think that's good. I think when we take the other session, when we are talking about about the next workshop, I think they'll get very clear picture about what needs to be done. I have invited Beenal and Vivek, both of them on stage. So, Beenal, do you have any other questions? You can unmute yourselves and ask it for yourself. Beenal? No, thank you. Yeah. Yeah. You have any other question? No, Otherwise, no, we. no, No. no, Okay. thank you. Yeah. So, Vivek, you can unmute yourselves and ask your questions.
Yes, hi. Am I Hey. audible? Yes, you are. Yes. So, my daughter is 6 years old, and Hmm. she was having a good appetite earlier, maybe like a year back. But now, due Hmm. to wrong feeding habits, etc., I think she has lost a bit of appetite. Like earlier, she used the quantity that she used to have, she's not having this year, like for a long time. So, how to bring that back, or how to correct things? Right. So, as you have already identified the cause that there was something wrong in her. One minute, 1 minute. Mr. Vivek, could you just mute yourself? Her Okay, yeah. voice is little equal. Yeah, please continue, Sanjana. Yes. So, as you have already identified the reason that there was something wrong with her routine, and that's how her hunger has gone down, it's a good sign. What you need to do is you need to start getting her diet to something which is easily digestible. So what to eat and how to eat, that we'll definitely discuss in the other upcoming workshop. But instead of giving her the same food that you have always been giving her, wait wait till she actually tells you uh, that she is hungry, and then give her food. And then whatever you give it to her, give it which is very easy to digest, something like vegetable soups or porridge or upma, watery upma. And then, as and when her hunger starts improving, you can slowly start adding things in her diet. Okay, thanks a lot for that. And just one thing that I also noticed that with every meal she has sweets, some kind of sweet, maybe due to wrong feeding again. So earlier it was not there. So now whenever she's hungry, she always asks for a sweet rather than a normal, non-sweet item. So how to do that? Like stop completely, or how to? Yeah. So, see, stopping anything completely is going to make the kid rebellious. So, instead of, stopping something, you can substitute it with some other sweet which is easily digestible. You can just give her one small piece of jaggery or one small piece of khadi shakkar and give it as a first thing of her meal instead of a dessert. So, I think that should be okay as sweet. Okay, so that like it is okay to give that much every meal at the first, and then Yeah. okay, okay, thanks, thank you. Provided she is hungry. Yeah, yeah, yeah. Yes. When she's hungry. Yeah. Okay. So, Vivek, you will have to ensure that nobody in the family force feeds your child, especially the mothers and grandmothers. Yes, yes, yes. Here nowadays the situation is a bit different. Maids are there, so you have to count on that also. That's Correct. where you have to be firm about it. That's a modern day, Hazard. you can say it's a boon and a disadvantage both. Yes, yes, true. Yeah. Uh, uh, if there are any more questions, would anybody like to ask any questions? Then please post it in the chat. And if there are no more questions, then we can wind up the session. I'll wait for 30 more seconds if somebody wants to post There's any one questions. question in the chat, how to understand that whatever food we are giving is enough for the child. uh, yeah, you can decide that upon the activity of your kid. If your kid is getting lethargic, or if he is getting sluggish after the meals, or the energy levels go down, that means that whatever you are giving is not getting processed properly, or it's not enough, either way. And if whatever you're giving for the child, if it's getting digested well, then you will be able to see it in his activity levels, in the uh, general content and happiness. Ma'am, if you would want to add something. Dr. Harsha can explain it further. Yeah. As Dr. Sanjana said, based on observing the activity of the child. So, see, Neha, every person, however small, a month old, a day old, a year old baby will also know that my tummy is full.
and they'll definitely show some signs. You have you understand your child is hungry. Not always you let your child cry, but you understand, right? So there are always some signs. Same way, there are always some signs when they are full. So a child naturally is built in a way or designed in a way where they will show a sign where their stomach is 80% full. So they'll deny the food, सिर हिलाएंगे, जगह से चले जाएंगे, lose interest, right? That's how you understand that now the stomach is full, even when the baby is not speaking. Dr. Harsha, can you please check in the chat because I was not able to see this question. If there are any more questions in the chat. Yeah, I'm checking. No, there are no more questions. Okay. ठीक है. Thank you, Dr. Sanjana. That was very beautifully Thank you, Dr. explained. Sanjana. Chalo. See you all, guys, Ma'am. for the next workshop. Thank you, everyone, for being here and patiently listening. Thanks, all of you. Good night.